Good morning, everyone. Welcome to the Economic Society. Myself, Pradeep Meher, a reader in your economics. And the objective of this group or this channel is to make you understand the economic concepts, theories, and models in the simple manner, so that you can easily understand the concept, and this can help you in the upcoming economics exam related exams like UGC-Net, SSB PGT. Okay, and basically assistant professor also this may help you. So in the today's class we are going to discuss about the fiscal policy. Am I audible? Am I audible? Okay. And am I visible? Okay. So today we are going to discuss about the fiscal policy. Okay, the slide is showing or not showing? The slide fiscal policy. Okay, so before going to discuss about the fiscal policy, what the meaning of the fiscal policy, then what are the types of the fiscal policy, what are the basically tools of the fiscal policy, and why the fiscal policy is important. First of all, we have to know basically the fiscal policy is what. Okay, generally the fiscal term is derived from a Latin word fiscus, F-I-S-C-U-S, fiscus, which means the public treasury. Okay, or you can say basically the government treasury. And generally, when we are talking about the fiscal policy is an economic policy which deals with the public revenue, public expenditure, public debt, budget, okay, etc. Am I audible clearly? Okay. So the slide is showing or not showing? Okay. So, have you understand what I have told? The fiscal policy is derived from a Latin word fiscus, which means the public treasury or government treasury. Okay, and we can say fiscal policy is another important economic policy which deals with the public revenue, public expenditure, public debt, budgeting, and the public administration. Okay, got the point? Okay, and this is the basically the meaning of the fiscal policy. And fiscal policy is a part of macroeconomic analysis. Okay, and basically in the macroeconomic analysis, we talk about the two important economic policies. One is the monetary policy, and the second one is fiscal policy. So monetary policy is the policy which deals with the demand for money, supply of money, and the rate of interest, CRR, okay, SLR, repo rate, reverse rate, all these things are included in the monetary policy. But fiscal policy deals with some other components and which is actually regulated by controlled by the central government. But in the monetary policy is controlled, regulated, or supervised by the central authority of the country or central bank of the economy. Or in India, RBI is the central monetary authority which controls the demand for money, supply of money, and the rate of interest. Okay, so that is not the part. And if you look into the classical point of view, classical does not give importance to the fiscal policy. Okay, they talk about only the invisible hand, full employment situation, but they did not talk about the fiscal policy, the role of the fiscal policy, etc. Okay, so fiscal policy is the policy which is very much important to stabilize the economy, okay, by the government, to stabilize the price, to make stabilize the
financial stability, economic growth. This helps by the fiscal policy. Okay, and fiscal policy is also known as budgetary policy because the fiscal is confined with the budgetary part, the expenditure, and basically the revenue part. That's why the fiscal policy is otherwise known as the budgetary policy. Okay, and there are many functions or many importance of the fiscal policy. Uh, One of the important things is that first thing is about maintaining the price stability, achieving the full employment situation, okay, achieving the financial stability, achieving the economic growth and development, achieving the balance of payment equilibrium situation. Because of these reasons also, fiscal policy plays an important role. Okay, now the and when we are talking about the classical part, now comes to the Keynes. Okay, Keynes is the father of modern macroeconomics, and basically Keynes is one of my favorite economists. And his ideology is based on the true market scenario. Rather than if you look into the classical, their assumptions, their ideology does not fit for the true market situation. Rather, the Keynes idea, Keynes ideology, and Keynes opinion views regarding the public expenditure, regarding the public revenue, regarding the fiscal policy plays a very important role. Okay, and basically Keynes is the first person who gave popularizing to the fiscal policy role of government. And before going to discuss about the fiscal policy during the Great Depression, okay, remember dear students or dear remember Great Depression, which was held in the America in the year 1930s. Okay, so basically, according to the classical, the full employment situation, invisible hand will play an important role to restore the economic imbalances or economic instability. But during the Great Depression, the ideology of the classical economists got failed. So at that time, Keynes came as a survivor, as a basically rescuer to rescue the whole world from the collapse of the Great Depression by suggesting, okay, increase the role of fiscal policy, increasing the role of government policy, which was neglected by the classical economist. Now comes to the fiscal policy, or basically in short, fiscal policy. You can say the government policy, or which is deals with the government sectors. Okay. Now, so now basically the fiscal policy, okay, is popularized by whom? The Keynes. John Maynard Keynes. He is the person who popularized who goes against the classical and suggested that if you want to survive from the Great Depression, we have to increase the role of government. We have to increase the role of government. Okay. And basically, this is the meaning of the fiscal policy. This is the meaning of the fiscal policy. The word fixed means state treasury or the public treasury or the government treasury. And fiscal policy refers to the policy concerning the use of state treasury or the government finances to achieve the macroeconomic goals. Whatever the macroeconomic goals like reducing unemployment, then controlling the inflation, controlling the deflation, achieving the full employment situation, achieving economic growth. These are the basically the macroeconomic goals. Okay, and fiscal policy involves the decision that a government makes regarding collection of revenue through taxation and non-tax revenue and about the spending that revenue. So basically, if you look into the household sector, generally what our basically father does, basically our father or basically my father, if you look into the household sector, my father's the main duty is to generate income by engaging in different economic activities. Okay, but all the things like expenditure, like management, is consigned by mother. Okay, like that, the government generates revenue by
or through the tax sources or through non-tax sources that we are going to discuss later. Okay, so the government generates revenue and the fiscal policy suggested where to spend that generated income. The income that we have generated should be spent for the development of the economy, should be spent for the betterment of the society, etc. So basically, this fiscal policy suggests how to generate income, okay, suggest how to spend that generated income, and whenever there is the expenditure is more than the revenue, the government suggests where to take loans, where to take borrowing. Okay, and basically this is called the fiscal policy. This is the meaning of the fiscal policy. Are you getting my point? समझ में आ रहा है? Okay, please reply in the chat box section whether you are understanding or not. Okay, now we are going to discuss about the important objectives of the fiscal policy. Just like the just like the um, just like the monetary policy, there are certain objectives of the fiscal policy also. The first one is the development by effective mobilization of resources. It means the full employment situation. ओके, अगर हम बात करेंगे तो पहले ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी का तो वो है फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? हमारे पास जितना भी रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस को फुल यूटिलाइज करने को कहते हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। Okay, and whatever the resources that we possess, the Indian economy possess, should utilize the resources so that we can get better facility, better utility from that resources, and we can achieve the full employment situation. The second one is reduction in the inequalities of income and wealth. Another important objective of the fiscal policy is to reduce the inequalities among the rich and poor. So the government should impose high a high tax on the rich people and low or basically concessional tax to the poor people, so that to an extent the basically inequality between rich and poor can reduce. And ultimately, as you all know, the resources are limited. Resources are limited. And basically, in India, the few hands, like the rich people are having very few people called rich people having very large amount of resources, while the large portion of the population that is poor are having very few amount of resources. So the inequality is increasing. So the objective of the fiscal policy is reducing the inequalities among rich and poor by imposing the tax, more taxes to the rich people and low or less tax to the normally the poor people. And now the another important objective is price stability and control of inflation. Okay, so price stability and control of inflation. So inflation is a situation in which the prices of all goods and services rises constantly, consistently, and continuously. Suppose the price of tomato, okay, today is 10 rupees. The price of tomato tomorrow will be 50 rupees. Then on the next day that will be 50 rupees. On the next day that will be 100 rupees. So the 15 rupees to 100 rupees the prices of tomato has changed, and that is called the continuous rise in the prices, which is nothing but inflation. Okay, or in simply inflation is nothing but the general rise in the price level. Okay, so the objective of the fiscal policy is to reduce the inflation.
by increasing the tax revenue and decreasing the public expenditure. When the government will increase the tax amount, suppose take an example. Suppose a person is earning 50,000 and paying 10,000 as a tax. Okay. Now the disposable income of that person is 40,000. Suppose if we increase the tax amount from the 10,000 to 20,000, what will happen? Now the disposable income will be 30,000. So when the disposable income decreases, what happens? The purchasing power of the people decreases, the demand for the goods and services decreases, and when the demand for the goods and services decreases, what happens? The prices of goods and services also reduces, and ultimately inflation can be achieved and the price stability can be achieved. Okay, thank you. Next one is employment generation. Okay, so basically the government allows different schemes, okay, different schemes, different programs through which the employment generation can be possible, and there can be a employment opportunity for the people. Okay, so basically suppose government wants to make new projects, like suppose new school, new colleges, new roads, okay, new public parks. For this expenditure, okay, for this expenditure, there is a high chance of the employment generation, because without the people, without the labor, the any government project cannot be succeeded. So there is a chance of employment generation. And now the important thing is that reducing the deficit in the balance of payment, reducing the deficit in the balance of payment. So basically, balance of payment is the systematic records of all the economic transactions of the domestic country with the rest of the world country. Or in simply, we can say balance of payment is nothing but imports of goods and services and exports of goods and services. What a country is exporting different kinds of goods and services to the other countries, and what a country is importing different kinds of goods and services from other countries. Okay, generally India export different types of agro-based products, okay, and imports different types of capital-based products. So the trade is nothing but the balance of payment. So basically, balance of payment deficit means the export is less than the import. So the fiscal policy always try to reduce the deficit of the balance of payment by exporting more and importing less. Okay. Now the increasing the national income. So, so another important objective of the the fiscal policy is increasing the national income. The national income will increase when the investment will increase. So when will investment increase? Suppose the government make a project. Okay. Suppose government spends, when the public expenditure increases, what will happen? The aggregate demand will increase. And when the aggregate demand increases, aggregate demand is more than aggregate supply. When the aggregate demand is more than aggregate supply, the prices of goods and services will increase. And when the prices of goods and services is increasing, what will happen? The law of supply will operate. Once the law of supply is going to operate, okay, the production will increase, and when the production increases, output increases. When the output increases, employment increases, and when the employment increases, national income is also increases. So for the increase in the national income, the government should increase the public expenditure. And the last but another important objective of the fiscal policy is development of infrastructure. Infrastructure means roads, okay, parks, school, colleges, dams, canals, etc. So these are the important objectives of the fiscal policy. Are you getting my point? Did you understand? Is that clear? Am I audible clearly? Okay, okay, thank you. Now, this is the important things, the instruments of fiscal policy. Okay, the instruments of fiscal policy. There are many instruments of the fiscal policy. The important instruments are public revenue,
Okay, public expenditure and public debt. Last point. Okay, okay. So the last point. So basically, the Bina Bag last point is development, the development of infrastructure. So the due to the investment by the government, the infrastructure of the economy can be developed. Suppose there is a remote area in India. So with the help of the public expenditure, the remote area can be developed by communicating the roads, by communicating the basically railways, by connecting the airlines, etc. So infrastructure means roads, dams, school, colleges, park, etc. are the infrastructure. Okay, Binabag, got the point? Okay, now the instrument of the fiscal policy. There are many important instruments of the fiscal policy. The first one is public revenue. The second one is public debt. The third one is public expenditure. The fourth one is budget. Okay, so basically now comes to the public revenue. What? Public revenue is the revenue generated by the government through tax or non-tax sources. Through tax or non-tax sources. Okay, got the point. Now the question arises, what is the tax revenue and what is the non-tax revenue? Okay, so generally the tax revenue is the revenue which is generated through imposing the different kinds of tax like income tax, like direct and indirect tax. And direct tax involves the income tax, corporate tax, capital gain tax, wealth tax, etc. But indirect tax involves, okay, the GST, goods and services tax, value added tax, custom duty, and etc. Okay, so the government imposes different kinds of tax. Okay, that may be the direct taxes and that may be the indirect taxes. Okay, so when the government imposes direct and indirect taxes and generates revenue by imposing the taxes, that is called the tax revenue. Okay, and what is now the another important question? What is non-tax revenue? So non-tax revenue is the revenue which is generated through some non-tax sources rather than tax sources. Like the important non-tax revenue sources are fines, challans, challans, cheat, special assessment. Okay, we'll discuss it very closely. Okay, now comes to the first tax sources. Okay, now first comes to the tax sources. So tax sources is two types. Tax sources, one is the direct tax sources, another one is indirect tax sources. So the question arises, what is direct tax? So direct tax is the tax in which the tax amount is directly imposes. The tax amount is directly imposed to the income of the people, income of the individual. Okay, or we can say direct tax is the tax in which impact and incidence fall on the same person. Impact and incidence fall on the same person. Okay, but in case of indirect tax, the impact and incidence is fall on the another person. Suppose मेरे नाम पे टैक्स उठा है, पर मेरा टैक्स कोई और देगा, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स. अगर डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? अगर मेरे नाम पे टैक्स आया है तो मुझे ही देना पड़ेगा, ये होता है डायरेक्ट टैक्स. समझ में आया? डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट में क्या है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? What is the direct tax and what is the indirect tax? Got the point? Okay, now the important thing is that I told about the impact and incidence. Impact means initial burden and incidence means final burden. Okay, impact means initial burden and incidence means final burden. Got the idea? Now comes to the
now comes to the basically non-tax revenue. Okay, now comes to the non-tax revenue. So non-tax revenue involves the fines. Suppose in the no parking area zone, I park my bike. So the traffic police will generate fines, and the fine amount will be go to the central revenue, or the basically will be included in the public revenue. Suppose I did not wear a helmet and riding a bike. Suppose traffic police, okay, stop me and generate a challan of 1,000 rupees, 10,000 rupees. So though 10,000 I have given, that will be included in the public revenue. Now the estate duty. Now the estate duty. Estate means, suppose I am an orphan, nobody of mine, only I am the orphan, and with the continuous hard work, I generate a lot of revenue, lot of income, lot of wealth, and suddenly suppose I expire. So whatever the income and whatever the wealth that I have possessed should be occupied by the government. So the after my death, all the income wealth will be occupied by the government, and that is also included in the non-tax revenue of the government or public revenue of the government. What the point? Now the another important is Bina bag, no sir. What do you mean? No sir means बिना बात नो मीन्स क्या, मतलब स्टार्ट ड्यूटी समझ में नहीं आया या कुछ और? बिना बात समझ में आया कि नहीं? सेकेंड पॉइंट चालान या स्टार्ट ड्यूटी? सेकेंड पॉइंट मीन्स चालान। ओके, एक बार फिर से तीनों चीजें रिपीट कर देना। ओके ठीक है, चलो। तो सपोज फाइन्स फाइन्स सपोज बच्चों, मैं मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ओके, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और नो पार्किंग जोन में मैं मेरा बाइक पार्क किया हूँ। तो नो पार्किंग जोन में जैसे मैं बाइक पार्क करूंगा, क्या होगा? ट्रैफिक पुलिस मेरे को फाइन लगाएंगे, 500 रुपया, 1,000 रुपया, 10,000 रुपया। तो जितना भी फाइन लगाएंगे वो हो जाएगा हमारे पब्लिक रेवेन्यू के इनमें जाएगा। और सेकेंड जिनिस चालान। सपोज मैंने हेलमेट नहीं पहना और बाइक चला रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? जब भी मुझे ट्रैफिक पुलिस रोकेगा तो मेरे नाम पे चालान काटेगा। और हेलमेट ना पहनने से अभी 10,000 का चलन है, तो जो भी 10,000 का चालान मेरे नाम पे कटेगा, मुझे तो एक दिन देना ही पड़ेगा। तो जब भी मैं 10,000 रुपये चालान दूंगा फॉर नॉट वेयरिंग द हेलमेट, सो तो वही 10,000 पब्लिक रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा। ओके, अभी समझ में आया बिना बात चालान क्या है? नाउ स्टार्ट। ओके, स्टार्ट का मतलब ये है, सपोज मैं अरफान हूँ, अनाथ हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, बाएं में कोई नहीं है, दाएं में कोई नहीं है। एंड विथ द कंटिन्यूस हार्ड वर्क मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत मेरे पास वेल्थ है। एंड सपोज मैं मर जाता हूँ या मेरा डेथ हो जाता है, तो मेरे पास जितना भी वेल्थ है, जितना भी पैसा है, वो क्या करेगा? गवर्नमेंट ले जाएगा। तो जितना भी मेरा वेल्थ है या जितना भी मेरे पास पैसा है, गवर्नमेंट ले जाएगा। तो ये चीज भी हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूडेड हो जाता है। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आया सभी को कि किसी को डाउट है अभी भी? अभी भी किसी को डाउट है क्या? ओके, नाउ गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू? समझ में आया? नाउ
Second important thing is the public budget. अर्जुन साहू, what you have not understand? अर्जुन साहू क्या नहीं समझे, बोलो. कंटिन्यू. ओके चलो ठीक. तो हेलो. तो डाउट नहीं है सर. ओके ओके, थैंक यू. नो सर मतलब डाउट नहीं है. नो लिखने से अच्छा तुम लोग क्लियर लिख दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि सब क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है. ओके, तो नेक्स्ट टाइम से क्लियर लिखने से मुझे पता चल जाएगा कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई भी डाउट नहीं है. ओके चलो. दूसरा आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर. पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारा गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स सोर्सेज से, नॉन टैक्स सोर्सेज से बहुत सारे इनकम जनरेट करता है. तो सिर्फ इनकम जनरेट करके वो सेव नहीं करता, उसको क्या करता है गवर्नमेंट, स्पेंड भी करता है. जैसे कि रोड बनाने में जो खर्चा लगता है, डैम्स बनाने में, स्कूल कॉलेजेस ये बनाने में जितना भी खर्चा लगता है, ये सब पब्लिक एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है. सो वी कैन इजीली से public expenditure is the expenditure made by the government for the betterment of the society, for the development of the society, for the development of the economy. For example, okay, uh, school, colleges, roads, dams, public parks, etc. These are the basically the public expenditure. Okay, now got the point. ठीक है, समझ में आ रहा है सब. ओके. नाउ जब भी गवर्नमेंट, जब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगा, तब क्या करेगा, बेसिकली गवर्नमेंट पब्लिक डेप्ट पॉलिसी अडॉप्ट करेगा. पब्लिक डेट मतलब इट इज द पब्लिक डेप्ट इज द डेप्ट फ्रॉम द सम इंटरनल एंड नॉन इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस. समझ आया. जब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगा, तब क्या करेगा गवर्नमेंट और सरकार दूसरों से लोन लेगा. दूसरों से मतलब वो इंटरनल सोर्सेज भी हो सकता है और एक्सटर्नल सोर्सेज भी हो सकता है. इंटरनल सोर्सेज मतलब वो देश के अंदर से ही क्या करेगा, लोन लेगा. जैसे कि सिटीजन से, इंडिविजुअल से, कमर्शियल बैंक से, सेंट्रल बैंक से वो लेने लगा. बट समटाइम्स क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्सटर्नल लोन लेता है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से लोन लेना, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना, और भी डिफरेंट कंट्री के साथ जिसके साथ इंडिया का सम रिलेशन अच्छा है, उन्हीं से उन देशों से इंडिया लोन ले सकता है. समझ में आया. गॉट द पॉइंट. ओके. सो समझ में आया कि नहीं. Okay, now look at this section. Now look at this. The direct tax and indirect tax. Okay, so direct tax involves what? The individual income tax. Suppose I am earning 10 lakh rupees in a year. Okay, so basically the 10% of the income will be, suppose the income tax is 10%. So I will pay 1 lakh as a tax to the government. So this is now the corporate tax. Okay. Now the corporate tax. Corporate tax is the tax which is imposed on the profit of the businessman. कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, जब भी कोई बिजनेस मैन के प्रॉफिट से जितना भी टैक्स लगेगा उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स. सपोज एक बिजनेसमैन साल में 4 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो जितना भी कॉर्पोरेट टैक्स होगा, मतलब 10% होगा तो 4% का 4 करोड़ का 40 लाख रुपये एज ए टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. वेल टैक्स सपोज 2% है, 2% है, तो पिछले साल मेरा वेल था 10 करोड़ का, अभी वो बढ़ के हो गया है 40 करोड़ का. जो एक्स्ट्रा 30 करोड़ का वेल्थ गेन हुआ है उसमें मुझको 2% टैक्स देना है, उसको बोलते हैं हम वेल्थ टैक्स. ओके. नाउ ये है डायरेक्ट टैक्स. इधर क्या होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन के ऊपर पड़ता है. ओके, बट in case of indirect tax, the impact and incidence fall on the different person. Suppose the producer. Okay, suppose the producer produces a commodity called X. Suppose a producer produces a commodity called X
at the cost of 10 rupees. And suppose the producer wants to sell this commodity X at 15 rupees. Okay, got the point? Okay, so the basically the wholesaler will get the goods at the rate of 15. So he will make some margin, and suppose the wholesaler will sell this X to the retailer at the rate of 70 rupees. So basically the wholesaler make a margin of 2 rupees, and retailer sell the good X to the consumer at the rate of 20 rupees. So also the retailer also make a margin of 3 rupees. This is the before scenario. Suppose the government has imposes a produce tray, or basically suppose imposes a tax on the producer. Now suppose government has imposed 2 rupees of taxes, 2 rupees of taxes on the on the producer. So when the tax increases, what will happen? The profit margin of the basically producer will reduce. So to maintain the profit margin, what will happen? The producer will increase the price. जो 15 रुपए में पहले बेचता था, अभी क्या करेगा? जो गवर्नमेंट 2 रुपए टैक्स लगाने से वो 17 रुपए में बेचेगा. ओके, फर्स्ट थिंग. तो पहले जो 15 रुपए में होलसेलर खरीद रहा था, अभी वो कितना रुपए में खरीदेगा? 17 रुपए में. ओके, देन वो रिटेलर को 17 रुपए में मतलब सेल कर रहा था, तो अभी कितना में? 20 रुपए में सेल करेगा. 3 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन रखेगा. अगेन यो रिटेलर क्या करेगा? कंज्यूमर को 25 रुपए में सेल करेगा. तो बेसिकली इधर पहले इंपैक्ट किस पे पड़ा? इनिशियल बर्डन किस पे पड़ा? प्रोड्यूसर पे. बट फाइनल बर्डन किस पे पड़ रहा है? कंज्यूमर पे. हु इज एक्चुअली द कंज्यूमर इज एक्चुअली बियरिंग द कॉस्ट ऑफ पेन, ओके, ऑफ टैक्स, पेन ऑफ टैक्स. समझ में आया कि नहीं? ये एग्जांपल है कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, जीएसटी. ये है इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? Okay, this is the public expenditure. Okay, so public expenditure is the expenditure made by the government of the economy or collective needs and wants, such as person, pension, provision, infrastructure, etc. Okay, basically there are many economic theories related to public expenditure. Okay, so note we are going to discuss about the theories. अगर हम वो जो थ्योरी भी है पब्लिक एक्सपेंडिचर का वो डिस्कस करेंगे ना, तो ये लेंदी हो जाएगा. ओके, तो हम नहीं चाहते कि इसको हम लेंदी करें. ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब ये ऐसा एक एक्सपेंडिचर है जो कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए और देश के बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए किया जाता है. जैसे कि रोड बनाना, रास्ता बनाना, ओके, देन स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, पब्लिक पार्क्स बनाना, ये सब होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का एग्जांपल. ओके, समझ में आया? एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर दो चीज को इंक्लूड करता है. वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अनदर वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? Okay, now the another important instruments of the public, the fiscal policy is public debt. Public debt is the process of taking loans when the public expenditure is more than the public revenue. जब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगा, तब क्या करेगा? गवर्नमेंट इंटरनली और एक्सटर्नली लोन. इंटरनल लोन लेगा तो क्या होगा? बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक, है ना, बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक. ओके, और एक्सटर्नली अगर लेगा तो वो दूसरे कंट्री से लेगा, किंबा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लेगा. तो पब्लिक डेब्ट इज टू टाइप्स. Public debt is two types. One is the internal borrowings or another one is external borrowing. So internal borrowing is the borrowing which is done or which is occur within the nation. Okay, within the nation means to absorb the money, the government takes back the money from the people.
from the commercial bank, from the central bank. Okay, and external banks means international organization like World Bank, International Monetary Fund, and etc. ओके, समझ में आया? तो इंटरनल डेब्ट क्या होता है और इंटरनल बोरिंग्स क्या होता है, एक्सटर्नल बोरिंग्स क्या होता है, समझ में आया कि नहीं? कि क्या किसी किसी को डाउट है क्या इसी टॉपिक में? मेरा आवाज क्लियरली सुन रहा है? एम आई विजिबल क्लियरली? ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बेसिकली okay next basically the types of fiscal policy. Okay, so basically there are two important types of fiscal policy. One is the expansionary fiscal policy and another one is contractionary fiscal policy. Okay, listen carefully what I am saying. So generally two types of fiscal policy. One is the expansionary fiscal policy and another one is contractionary fiscal policy. Okay, the basically the flexible exchange rate is determined by the market forces of demand and the supply of foreign exchange. Binabag, the market forces of the flexible exchange rate is determined by the market forces of demand and supply. Okay, so what does expansionary fiscal policy means? The expansionary fiscal policy means जब भी हम पब्लिक एक्सपेंडिचर का बढ़ाएंगे और टैक्स को कमाएंगे, उसको हम बोलते हैं एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी. मतलब एक्सपांशनरी मतलब एक्सपांशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. एक्सपांशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी इज नथिंग बट एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी. Okay, or contractionary means reduction of or basically outflow of the national income in the economy. That is the contractionary fiscal policy. Or contractionary fiscal policy means reducing the public expenditure and increasing the tax. समझ में आया? एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या है और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या है, समझ में आया कि नहीं? Okay, now basically generally the fiscal policy is two types: discretionary policy and one is non-discretionary policy, fiscal policy. So discretionary policy deals with what? Discretionary policy deals with to cure the recession by increasing the public expenditure or reducing the tax. Okay, and this is the public expenditure part, expansionary public expenditure. And to control the inflation, okay, the government always adopt the contractionary fiscal policy, means raising the taxes and reducing the public expenditure. So that can be the inflation can be controlled and recession can be cured. Recession can be cured by increasing the public expenditure and reducing the tax, and inflation can be controlled by increasing the tax and reducing the basically public expenditure. Now the non-discretionary fiscal policy, one is the transfer payment and personal income taxes, corporate income taxes, and corporate dividend policy. So the transfer payment is a payment made by the government to the people for the betterment of the society. Okay, for the betterment of the society, like pension, scholarship, okay, unemployment allowances are the example of transfer payment. And personal income taxes means suppose a person is earning 50 lakhs rupees in a year, so he will pay some taxes, income taxes, and that tax is nothing but the personal income taxes. And corporate income taxes, जो मैं कुछ समय पहले ही बोला था कि अगर किसी भी बिजनेसमैन के प्रॉफिट पे अगर टैक्स इम्पोज होगा तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस. ओके, समझ में आया? किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है कि समझ में आया? हाँ हाँ बिना बात जी, वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर मनी सप्लाई, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से डिटरमाइन होता है. ठीक है ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का अनदर नेम ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है. ओके ठीक है, चलो चलो
तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिकली डेफिसिट. व्हाट डज इट मीन? डेफिसिट मतलब क्या? डेफिसिट मतलब अगर हम खर्चा ज्यादा करेंगे और कम कमाएंगे तो क्या होगा? डेफिसिट होगा. तो वैसे भी बहुत सारे डेफिसिट है. जैसे कि पहले हम आज जैसे देखते हैं कि पहले हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, मतलब ज्यादा हम इंपोर्ट करेंगे और कम एक्सपोर्ट करेंगे. इसमें क्या होगा? नेगेटिव और नेट इंपोर्ट होगा, जो कि डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है. और फिस्कल डेफिसिट भी हो सकता है. फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है, जब भी टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा टोटल रेवेन्यू से, तो उधर हमको मिलेगा फिस्कल डेफिसिट. ओके. और भी बहुत सारे डेफिसिट है. अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो लेंदी हो जाएगा. सो दो टाइप्स, टू टाइप्स का डेफिसिट है. वन इज द फर्स्ट रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, and capital deficit means capital expenditure minus capital receipt. So we can say fiscal deficit equals to total expenditure, that is the revenue expenditure plus capital expenditure minus total receipt, that is all revenue and capital receipt other than loans taken. बोरिंग्स को छोड़ के, लोन्स को छोड़ के जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर है और टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं फिस्कल डेफिसिट. समझ में आया? Or basically fiscal deficit is the difference between the total expenditure and the total receipt, okay, excluding the borrowings, excluding the borrowings, okay. And these are the basic achievement of the fiscal policy in India. Okay. By adopting the fiscal policy by the government of India, the government of India has achieved these phenomena or these concepts like mobilization of resources. It means whatever the resources we have that are going to be mobilized from one place to another place, that is called mobilization of resources, or you can say full employment scenario. Now the second one is when the national income increases. Okay, the objective of the national is the fiscal policy is also increasing the national income. And when the national income will increase, the saving will automatically increase. And when the saving increases, capital formation also increases. And when the capital formation increases, the investment also increases. So there is the positive relationship. So these variables, the macroeconomic variables, show the positive relationship among themselves. Now, and when the basically what happen, investment increases, the reduction in the income and wealth inequalities. जो मैं कुछ समय पहले बोला था कि इनकम, गरीब लोगों का इनकम बहुत कम है. जैसे कि वो ज्यादा लोग हैं, ज्यादा पॉपुलेशन है उनका, फिर भी उनके उनके हाथ में बहुत कम रिसोर्सेस है. और धनी मतलब रिच बहुत नहीं है, कम है, और उनके पास ज्यादा ही रिसोर्सेस है. तो इसके उसकी वजह से क्या होता है कि इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज क्रिएट होता है. तो ये इनकम एंड इनइक्वालिटी क्रिएट को कैसे दूर कर मतलब कम कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द टैक्स, by imposing high tax on the rich people and imposing very less or low tax to the poor people. Okay, and reduction in the inter-regional variations. वो जो भी इंटर रीजनल वेरिएशन मतलब है उसका भी हम मतलब क्या रिड्यूस करें. दिस इज द बेसिकली अचीवमेंट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया. ओके, इन इंडिया. समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? This is the fiscal reforms in India. So basically there is need. If there is a fiscal policy, so there should be a reform in the fiscal policy, because of which we can achieve the, and we can up to date to the present scenario. We can match to the present year. Okay, or we can predict the future consequences. समझ में आया? पहला होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम. जो भी टैक्स सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल कर दो. जैसे कि एक मतलब अनपढ़ लोग, अनपढ़ व्यक्ति भी और अनपढ़ पर्सन भी समझ पाएगा कि तुम्हारा इनकम 1 लाख रुपए है, तुमको 10% टैक्स देना है. सिंपल कर दो, टैक्स सिस्टम को सिंपल कर दो. इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी रहेगा गवर्नमेंट और लोगों के बीच. सेकेंड वन इज इंप्रूविंग द टैक्स टू द जीडीपी रेशियो. इट मीन्स इंप्रूविंग मतलब टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओ. टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओगे तो जीडीपी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. रिडक्शन इन द रेट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स. जितना भी डायरेक्ट टैक्स है उसका रेट्स क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए.
जैसे कि एक व्यक्ति सपोज एक साल में 15 लाख रुपए कमा रहा है एंड 15% सपोज टैक्स दे रहा है, तो क्या करना चाहिए, तो उसका जो 15% टैक्स है उसको कमा कर घटा कर उसको क्या करना चाहिए, 10 या 12% कर देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से हमारा जीडीपी हाई इम्पोर्ट से बढ़ेगा। एंड रिफॉर्म्स इन द इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स में जितना भी लेकुना है लूपहोल से उसको ठीक करना, इसका रिफॉर्म्स इन इंडिया है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विस टैक्स, एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, 1994 में सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब होता है कि अगर तुम किसी भी सर्विस को एम्प्लॉय करेंगे तो सर्विस के बदले तुमको टैक्स देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सर्विस टैक्स। जैसे कि आप सभी लोग या तुम में से कोई, आप सभी में से कोई रेस्टोरेंट खाना खाने गया होगा, तो क्या होता है वो देखोगे तो सर्विस टैक्स ऐड कर देते हैं। ओके, तो वो जो टैक्स ऐड कर देते हैं उसको बोलते हैं सर्विस टैक्स। समझ में आया कि नहीं, किसी का डाउट है? Okay, another basically the fiscal reforms. One is the non-planned government expenditure. Okay, the reduction in the subsidies, closure of sick public sector company, disinvestment of public sector union, efforts to reduce government administrative expenses. Okay, समझ में आया कि नहीं? ये है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2023। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम इन द कंट्री, टू इंट्रोड्यूस ए मोर इक्विटेबल एंड मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन, okay, distribution the country's debts over the year, and to aim for the fiscal stability for the India in the long run. Or basically the primary objective of the FRBM Act 2023 is to reduce the India's fiscal deficit. It means the total expenditure should be reduced and public revenue should be increased. Then then this fiscal responsibility and budget management act can be found. Okay, got the point? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? ओके, ये है कंक्लूजन पार्ट है। और 2 मिनट ओके, 2 मिनट। नाउ द बजट, नाउ द बजट। ओके, सो व्हाट इज बजट? सो बजट इज द एस्टिमेटेड प्लान। इट मीन्स आज हम प्लान करेंगे कि अगले साल मतलब डिफेंस में कितना खर्चा करेंगे, ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना खर्चा करेंगे, ओके, और किस किस जगह से कितना पैसा कमाएंगे, क्या करता है बजट सब डिस्कस करता है। एंड ईच ईयर, ओके, 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री क्या करता है, बजट को पार्लियामेंट में सबमिट करता है। ओके, बजट को सबमिट करता है। एंड बेसिकली बजट को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ओके, एंड बजट वर्ड is derived from a French word. Budget word is derived from a French word bogetti, which means a pink leather bag or leather bag. And in India, okay, in India, in Indian Constitution, the budget was enacted on the 112th article of the Indian Constitution. Got the point? ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट द फिस्कल पॉलिसी। अगर किसी का डाउट है तो बोलो, वरना हम इधर स्टॉप करेंगे। किसी का डाउट है? हम जो कुछ भी पढ़ा आज, किसी का डाउट है क्या? नहीं, अगर है तो बोलो, अगर है तो बोलो। और बच्चों, अगर तुमको और आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूं या मतलब लाइव क्लासेस लूं, तो कुछ करना नहीं है, जब जस्ट वीडियो को लाइक करो, वीडियो में कमेंट करो जिस टॉपिक में आप पढ़ना चाहते हो, और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, thank you. Now
Today, some other day, we will discuss the another part of the economics. Theories, that may be the theories, that may be the model, that may be the basically concepts. Okay. Thank you so much.